Hello everyone, this is Samiksha Sethia. I hope you guys are doing good and you all are safe and healthy, as well as you are studying well for the upcoming examination. As you know, the CA intermediate and final examinations were supposed to be held in May 2021 have been postponed as of now. The new dates have not been announced. तो institute जो है 25 days की notice देगा and then they will announce the new dates of the exam considering the situation in our country as far as the pandemic is concerned. Alright, in this video, as you can see, I'm going to discuss the mock test paper of Auditing and Assurance, which was released in May 2021, that is for your May 21 examination. March 2021 में इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट किए थे उसका हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. I will not be discussing all the questions because a lot of questions are common from your study material, from the past papers, RTPs, etc. सारे questions हम discuss नहीं करेंगे. We will only focus on the new questions, on the tricky ones that were asked in this paper. And guys, it is very important for you to see the mock test papers which are conducted before your exam term. उससे questions exam में आने की probability ज़्यादा रहती है. In fact, you should also refer to the mock test papers of the previous examination term because there might be a case कि institute directly उन mock test paper से ही कोई question आपसे. अभी मैं बात करूँ अगर CA इंटर ऑडिट पेपर की, तो जो भी स्टूडेंट्स May 21 वाला जो एग्जाम टर्म जब भी होगा उसमें एग्जाम देने वाले हैं इन द न्यू सिलेबस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अपडेट योर सेल्फ विद द चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन द ICAI स्टडी मटीरियल. उसके लिए ऑलरेडी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है ऑफ ऑल द चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन द न्यू ICAI स्टडी मटीरियल. इफ यू हैवंट वॉच्ड देम येट, आई विल लिंक द प्लेलिस्ट ऑफ दैट लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. आप वहाँ से जाके जो है वो वीडियोस को देख के अपने आप को अपडेट कर सकते हैं. इवन इफ यू हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम अस, ठीक है, आपने अगर हमारी रिविजन सीरीज अटेंड की थी, हमारी क्लासेस ली है, तो भी आपको वो वीडियोस देख के खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई विल शो यू इन दिस पेपर इटसेल्फ दैट इंस्टीट्यूट हैज़ आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यू अपडेट्स दैट हैज़ बीन मेड इन द स्टडी मटीरियल. तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट गाइज, इफ़ यू थिंक दैट आई एम एडिंग सम वैल्यू टू योर स्टडीज़, then do subscribe to the channel because I keep posting new updates and especially those relevant for your audit and economics paper and also for CA and CMA. ठीक है ना. वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन क्वेश्चन से, इन वीडियोस से जो है हेल्प हो सके. अभी हम स्टार्ट करेंगे. तो जो MCQs है, स्पेशली द केस सिनेरियो ओरिएंटेड MCQs, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये नए हैं. दैट नए, जब मैं कहती हूँ क्वेश्चंस नए हैं, दैट मीन्स दे हैव नॉट बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन एनी ऑफ द ICAI पब्लिकेशन. तो एक तरह से आपका एप्लीकेशन स्किल जो है वो यहाँ टेस्ट हो जाए. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला जो केस सिनेरियो है, घनश्याम एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920. द एंगेजमेंट पार्टनर CA घनश्याम established the overall audit strategy and made the detailed plan with respect to the audit assignment of ABC Limited after discussing the same with the engagement team. तो engagement partner ने क्या किया, overall audit strategy और audit plan बना लिया. बहुत बढ़िया. The strategy adopted by Ghanshyam and associates consisted of relying on the internal control system of the company and the audit plan and program were developed accordingly and executed by the engagement. तो आपको पता है दो स्ट्रैटेजीज हो सकती है. एक होता है रिलाई ऑन कंट्रोल्स, एक होता है नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल्स. यहाँ पर घनश्याम एंड एसोसिएट्स ने कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की? टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, द एंगेजमेंट पार्टनर CA घनश्याम फाउंड दैट some internal control system of the company were not in place. So he decided not to rely on the internal control system of the company and accordingly changed the firm's overall audit strategy, audit plan and audit program. So during the year उनको क्या पता चला कि internal control system were not in place, there were weaknesses. तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने audit strategy को जो है change किया. Accordingly audit plan and program were also changed. कोई स्टैंडर्ड आपको यहाँ
अभी तक क्लिक कर रहा है? कौन से स्टैंडर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है? कौन से स्टैंडर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है? मैम ये है हमारा रिलेटेड टू SA 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम बात करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान की. ओके. While conducting audit, the engagement partner also discussed with his team regarding the audit procedures to be performed to verify the debtors balance of ABC Limited. तो इन्होंने audit procedures discuss किए, how can we verify the debtors balance. CA Ghansham also asked for the addresses of various debtors from the management of ABC Limited to send balance confirmation request to such debtors. Remember external confirmations as per SA 505, तो वो हम सेंड करने वाले हैं टू द डेटर्स. द मैनेजमेंट प्रोवाइडेड सच एड्रेसेस टू द ऑडिट टीम. However, the management of ABC Limited asked the debtors to send the responses to such confirmation request to the general manager of the accounts department. ये क्या बात हुई? डेटर्स को क्या कह दिया गया कि आप जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स है ना, ऑडिटर को डायरेक्टली मत भेजना, आप उस रिस्पॉन्स को जनरल मैनेजर को भेज देना. ये किसको कहा गया? डेटर्स को. हु विल इन टर्न प्रोवाइड सच रिस्पॉन्सेज टू द ऑडिट टीम. मतलब द रिस्पॉन्सेज शुड रूट थ्रू द जनरल मैनेजर ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, विच इज नॉट करेक्ट. डायरेक्ट कंफर्मेशन जो होता है, रिटन कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसका रिस्पॉन्स शुड बी डायरेक्टली सेंड टू द ऑडिटर. Also, with respect to 5 random debtors, CA Ghansham decided to confirm the terms of agreement along with confirming the balance amount. If you remember SA 505, उसमें हमने पढ़ा है कि external confirmations should not only be used, they should not only be used to confirm balances and amounts, they can also be used to confirm some non-financial facts like terms of agreement, contract हो गया. ये सब कंफर्म करने के लिए भी वी कैन यूज एक्सटर्नल कंफर्मेशन. सो CA घनश्याम इज यूजिंग दिस. इन्होंने ऐसे 505 बहुत अच्छे से अप्लाई किया है. बाय सीकिंग रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम सच डेटर्स. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिटर फाउंड दैट, अब इन्वेंट्री की बात हो गई, इन्वेंट्री ऑफ ABC लिमिटेड इज केप्ट एट इट्स फैक्ट्रीज एंड वेरियस अदर लोकेशंस इंक्लूडिंग वेयरहाउसेस. द ऑडिट टीम is unable to attend the physical verification activity undertaken by management at all such locations. तो guys, इस पैराग्राफ में हमें कौन सा ऐसे रेफर किया? यहाँ पर हमें रेफर करना है ऐसे 505, ठीक है. यहाँ पर हम रेफर करेंगे ऐसे 300. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्रीज की, क्या आप मुझे बता सकते कौन सा ऐसे हम रेफर करेंगे? मैम ऐसे 501, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, राइट. वहां पर 3 आइटम्स थे, याद है आपको? इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन, राइट. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिट टीम फाउंड दैट लीगल केसेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट. CA Ghansham discussed with his team regarding the audit procedures that can be performed by the audit team in this regard. CA Ghansham also briefed his engagement team regarding the documents to be included in the audit file with respect to the audit assignment of ABC Limited. ठीक है, कुछ केसेस वगैरह पेंडिंग है. Based on the above facts, answer the following question. तो आपको पता है जो भी केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स ईच होते हैं, 2 into 5 10 मार्क्स. ओके. पहला सवाल, is CA Ghansham right in changing the overall audit strategy and plan after the audit team has started working as per the earlier strategy established and the plans so developed? तो क्या during the course of audit हम audit strategy, audit plan को change कर सकते हैं? Yes, we can do so. तो पहला जो ऑप्शन है, CA Ghansham is not right, as once the audit team has started the work, it is not correct to change the audit strategy and plan. This option is incorrect. CA Ghansham is not right, as once the overall audit strategy has been established, the same cannot be changed. Audit plan को रिवाइज कर सकते हैं, ये भी गलत है. हम strategy plan दोनों को ही रिवाइज कर सकते हैं. CA Ghansham is right in making the changes to the overall audit strategy and the audit plan. Last option, CA Ghansham can change the overall audit strategy and audit plan only after discussing the same with the management. अगर आपको अपनी audit strategy, audit plan change करना है तो आप क्या आपको management से discuss करना जरूरी है? No. So option C is the correct answer. Right? चलो अगला सवाल. Which of the following audit procedures should the audit team perform with respect to verification of the debtor's balance? With respect to verification of the debtor's balance. Option number A.
घनश्याम एंड एसोसिएट्स कैन कंपेयर, ठीक है, द डेटर्स बैलेंस रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द टोटल बैलेंस ऑफ लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड. घनश्याम एंड एसोसिएट्स कैन ऑब्टेन direct balance confirmation from the debtors as this is external evidence which is most reliable and relevant, correct? Ghanshyam and associates can obtain management representations with respect to the debtors balance from the management and need not perform other audit procedures as obtaining written representation constitutes sufficient appropriate audit evidence. ये बिल्कुल गलत है. लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. हम ए भी परफॉर्म कर सकते हैं, बी भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट 1 इज गिवन, द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस is influenced by its source and its nature and the circumstances under which it is obtained. The reliability of information. Okay. Statement 2, the audit evidence obtained from sources external to the entity are generally more reliable than the audit evidence obtained from internal sources. Of course, जो बाहर से evidence आ रहा है that is considered to be more reliable. तो दोनों statements ही correct है. Option C is the correct answer. Both the statements are true. Next question, with respect to inventory of ABC Limited kept in the warehouse, which audit procedures can the audit team perform to obtain sufficient appropriate audit evidence? So as you know that the audit team could not attend the physical verification. तो अब क्या audit procedures perform करेंगे to obtain SAAE regarding the inventories? So option A is checking of warehouse receipt with the inventory record of ABC Limited. Obtaining direct confirmation, तो ये क्या हो गया, checking the warehouse receipt, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंस्पेक्ट करना. Obtaining direct confirmation with respect to quantity and condition of inventory from the warehouse, both A and B. And last option is seeking a management representation regarding inventory valuation and mentioning the fact regarding inventory being kept at the warehouse. Is obtaining written representation the ultimate solution? No. Option C is the correct answer. हम both A and B perform करेंगे. Warehouse receipt को inspect करेंगे और external confirmation भी obtain करेंगे. ठीक है? Direct confirmation. जो भी warehouse का store keeper है वहाँ से हम लोग direct confirmation we can also obtain. Next question, is management correct in asking the debtors to provide the reply of confirmation request of auditor to the general manager of accounts department of the company? Is management correct in asking the debtors to provide reply directly to the management? Yes, the management has correctly asked the debtors to respond directly. No, management is not correct here. No, management is not correct in asking for a direct response to the general manager of accounts department, as external confirmation is the response obtained directly by the auditor. Third option is yes, the management is correct in advising direct response to the GM, as this will ensure that only correct information are provided to the auditors. This might also ensure that manipulation can be made by the general manager of the accounts department, which we do not want. So this is also incorrect. No, the management is not correct, as this is the option of the auditor to see if response to external confirmation is to be obtained by management or the auditor himself. This is also incorrect. So option B here is the correct answer. Clear? चलो next question देखते हैं. RRM and associates have been appointed as the statutory auditors of UVW Limited for the financial year 1920. The engagement partner is CA Raj and his engagement team consists of 2 articled assistants. CA Raj briefed his audit team regarding the factors affecting the sample selection and the sample size. The team was also told that tolerable error should be 0. Tolerable error should be 0 and sample size should be selected accordingly. आप मुझे बताइए कौन सा standard है यहाँ पर? This is SA 530 audit sampling. इस तरह से जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो जस्ट कीप रिलेटिंग विथ व्हाट यू हैव स्टडीड. क्या कोई स्टैंडर्ड याद आ रहा है उसको लिख लो पास में. क्या कोई आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा है तो उसको आप रिटेन करके रखो दिमाग में, सो दैट हेल्प्स यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस.
The team was also told, CA Raj gave a detailed audit program to his team. The audit program with respect to checking of accounts receivable and accounts payable consists of checking the accounts on a sample basis. तो sampling कहाँ पे apply कर रहे हैं? Accounts receivable and payable में. CA Raj asked the engagement team to divide the accounts receivable and account payable balances into separate groups and to take sample from each one of them. क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सी टेक्निक है ऑफ सैम्पलिंग? मैम इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ठीक है, हम स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे. डिवाइडिंग द सैम्पल into different stratas and then choosing sample size from choosing samples from each of the strata. During the course of audit, the audit team noticed that certain internal control system with respect to accounts receivable were not in place. Also, while checking the payment transactions on sample basis, the engagement team noticed that on a 9th and 10th of every month, the miscellaneous expense vouchers were not signed by the authorized personnel. तो ऐसा 9 और 10 तारीख को every month हो रहा है कि the expense vouchers are not signed by the authorized personnel. The engagement team discussed with the implications of the same on their audit procedures to be performed in this regard. So if you know investigation of the deviations, अगर anomaly है तो बात अलग है, but यहाँ पे anomaly नहीं है. ये जो है ये ऐसी misstatement है which is possessing similar identified characteristics. 9th and 10th every month ये क्यों हो रहा है? It might be an indicator of some kind of fraud. ठीक है, चलो questions देखते हैं. Which of the following factors should not be considered? देखो guys, MCQs पढ़ने के time you should read the question very carefully. What is it asking? Which of the factors should not be considered by CA Raj in deciding the extent of checking? So factors determining the extent of checking of the sample plan in case of UVW limited. तो size तो हम लोग consider करते हैं, size of UVW we consider, state of internal control of the company also we consider, tolerable error range also we consider. So what we do not consider is the competence of engagement team, because that is not relevant to determine कितना sampling करना है. आपकी engagement team कितनी competent है, that is not a factor to decide how much sampling you need to do. So ये तीनों statement correct है. This is to be considered. Option D is not to be considered. With respect to the weaknesses in internal control system of accounts receivable during the financial year 2019-20, the audit team, since there were weaknesses in the internal control, so sample size क्या होना चाहिए? Should be larger. So the auditors should consider a larger sample size or 100% examination of accounts receivable. Should consider a smaller sample size? No. Should not consider applying sampling technique? नहीं. Sampling technique apply करेंगे, but sample size large हो सकते हैं, because it was decided earlier कि accounts receivable and payable में we are going to apply sampling. Should give a disclaimer of opinion? No. ऐसा थोड़ी कि audit evidence नहीं प्राप्त हो पा रहा. डिस्क्लेमर कब देते हैं? when there are limitations in the scope of the audit, या फिर the auditor is unable to obtain SAAE और उसका जो possible effect है it is considered to be material and pervasive. Here तो option A is the correct answer. Statement 1, while conducting an audit it is obligatory for the auditor to apply sampling. क्या जरूरी है कि sampling perform करना ही पड़ेगा? No, it is on the choice of the auditor. प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा. स्टेटमेंट 2, देयर मे बी समटाइम्स वेयर टेस्ट चेकिंग और सैम्पलिंग मे नॉट बी सूटेबल. ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग. तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. जैसे स्टेटमेंट 1, 2 का क्वेश्चन आता है तो उसमें ट्रू फॉल्स पूछते हैं आपसे कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है कि दोनों करेक्ट है कि दोनों इनकरेक्ट है. विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टिंग सैम्पल फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल, which method of sampling is advised by CA Raj to the engagement team? ये हमने पहले ही कर लिया. This is stratified sampling method. With respect to the deviation identified by the auditor occurring on 9th and 10th of every month, what course of action should the firm adopt? So this is a good question. RRM and associates should ignore such deviation. बिल्कुल गलत. Deviation को ignore कर देंगे क्या? नहीं.
RRM and associates should extend its audit procedures to such deviated transaction. You need to perform more audit procedures on these particular transactions. RRM and associates shall investigate the nature and causes of deviation, as such deviations may be intentional and may indicate the possibility of fraud. So this is also correct, this is also correct. So both B and C, option number D is the correct answer. Clear? चलो, तो केस सिनेरियो ओरिएंटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. अभी हम आते हैं जनरल एमसीक्यूज. पहला क्वेश्चन, डैश इज द थ्रेट विच अकर्स व्हेन द ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली. ऐसा काम किया तो देख लेना. डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसको हम कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट. तो देखो गाइस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके डायरेक्टली आपको आंसर आते हैं. उसको एक केस में आप जस्ट ऑप्शंस ग्लांस कर लो एंड इफ यू फाइंड योर करेक्ट आंसर, गो फॉर इट. Which of the following is an example of revenue expenditure? Now for this I need to read all the options. Is an example of revenue expenditure. Wages on installation of machinery, ये कौन सा expenditure है मैम? ये capital expenditure है. ठीक है. Regular repairs incurred on PPE, regular repairs है तो ये है एक revenue expenditure. Legal expenses in purchase of land building, again it is capex. Freight inwards on purchase of PPE, again it is capex. ठीक है, because it is the expense is incurred to bring the asset or the property, plant and equipment to the location and condition for use. Hence it's a capital expenditure. Essay 320 on materiality in planning and performing an audit requires that an auditor should not consider materiality and its relationship with audit risk. बिल्कुल गलत. Should consider materiality and its relationship with audit risk while conducting an audit. Should not consider materiality but should consider its relationship with audit risk. ये भी गलत है. Materiality भी consider करना है, relationship with audit risk भी consider करना है. Should consider materiality but need not consider its relationship, ये गलत है. So option B is the correct answer. Clear? चलो next question. In relation to completed engagements, procedures designed to provide evidence of compliance by the engagement teams with the firm's quality control policies and procedures is known as. तो इसके दो करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं गाइज. एक हो गया आपका ऑप्शन ए मॉनिटरिंग. इफ यू रिमेंबर ये कौन से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है? SQC1, राइट, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड. तो जो कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स हो गया उसको पिकअप करके वी सी इफ द firm's quality control procedures and policies were adhered to or not by the engagement team. तो उसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग. उस एलिमेंट का नाम है मॉनिटरिंग. बट इसका जो प्रोसीजर है, अगर मैं बात करूँ इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, सो वन ऑफ द प्रोसीजर इज इंस्पेक्शन. ठीक है, जो कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम इंस्पेक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं. बट इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, तो हम इसी के साथ जाएंगे. इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द आरटीपी ऑल्सो, जहां पर मैंने आपको बताया था मॉनिटरिंग इज द करेक्ट आंसर. इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर गलत दिया है, बट बोथ कैन बी द करेक्ट आंसर. सिंस दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द इंस्टीट्यूट्स पब्लिकेशंस ट्वाइस, वी विल गो विद द ICAI करेक्ट आंसर. ऑल्दो इसका मोर क्लोज जो आंसर है दैट इज मॉनिटरिंग, बिकॉज एक ब्रॉड यहाँ पर पूछा गया है कि क्या प्रोसीजर उसको कहते हैं, तो वो मॉनिटरिंग हो गया. मॉनिटरिंग आप बहुत अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं. वन ऑफ द प्रोसीजर इज इंस्पेक्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर SQC1 द रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑर्डिनरीली इज नो शॉर्टर देन. रिटेंशन पीरियड कितना होता है? नो शॉर्टर देन 7 years. सीधा सीधा आपको पता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. Which of the following is correct in case of joint audit where there is disagreement with regard to the opinion or any matters to be covered by the audit report? Disagreement है तो joint auditors can issue separate audit reports, but they need to make reference of the reports of other auditors by way of an emphasis of matter paragraph. तो यहाँ पे options देखो. The auditor shall express their opinion in separate audit report. The audit reports issued by the joint auditors shall make a reference to each other's report. Both A and B are correct. The auditor who is having a separate opinion is bound by the opinion. Bound है क्या auditors? No, they can issue a separate audit report. So option C is the correct answer. Both A and B. Dash refers to representations made by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider different types of potential misstatements. So representations made by management
काफ़ी स्टूडेंट इसके लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन चूज करेंगे, विच इज द रॉन्ग आंसर. Representations made by the management that are embodied in the financial statements, these are known as assertions. ठीक है, if you are not very confident with these terminologies in audit, आपको confusion है, assertions के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बना के डाला है, आप उसको देख सकते हैं. इनफैक्ट हमने एक बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग कोर्स भी करवाया था ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, जिसमें हमने सारे ऑडिट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड जो भी बेसिक्स विच अ स्टूडेंट शुड नो वो कवर किया था. If you want to enroll for the course, I'll give the link of the course in the description box. It's free, only 4 classes. You will get the notes also. तो ज़रूर से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपको ये बेसिक्स में कन्फ्यूजन्स है तो. The persons with responsibility for overseeing the strategic direction of the entity and obligations relating to accountability, इनको क्या कहते हैं? Those charged with governance. बहुत सिंपल था. तो ये भी हमने अपने बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग क्लास में कराया था. इफ यू हैव अटेंडेड बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग क्लास, 3-4 क्वेश्चंस यहाँ के वहीं से आपको मिल जाएंगे. The risk that financial statements, again we have covered this also in the basics of auditing. The risk that financial statements are materially misstated prior to audit, इसको क्या कहते हैं? Risk of material misstatement. कुछ स्टूडेंट इसको ऑडिट रिस्क चूज कर लेंगे, बट ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ऑडिट रिस्क. उसके 2 पार्ट है. फिर रिमेंबर उसके 2 पार्ट है. वन इज योर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सेकंड इज द डिटेक्शन रिस्क. सो द करेक्ट आंसर हियर इज RMM. लास्ट क्वेश्चन इन द MCQs, इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिकेट an incentive or pressure to commit fraud or provides an opportunity to commit fraud, इसको हम कहते हैं fraud risk factors as per SA 240. चलो अभी हम करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. काफी क्वेश्चंस यहाँ पर सिमिलर हैं, तो जो क्वेश्चन 1-2 नए हैं उसको मैं पिकअप करती हूँ. सी क्वेश्चन नंबर 5. All NGOs are allowed to maintain accounts either on accrual basis or cash basis. The statement is incorrect. NGOs which are incorporated under the Companies Act 2013, ठीक है, in the form of a company, in that case they are required to maintain the accounts on accrual basis. अगर नहीं maintain करते तो section 128 का contravention होता है, 128 of Companies Act. But other NGOs which are say registered as society, as trust or any other legal form, they can maintain their accounts either on cash basis or accrual. So this statement is incorrect because it says all. Next ये वाला question देखो, question number 7. No entry is passed for checks received by the auditee on the last day of the year and not yet deposited with the bank. That means 31st March अगर closing हम मानते हैं, उस दिन checks receive हो गया, ठीक है, डेटर्स ने सपोज चेक इशू करके दे दिया, बट यू हैव नॉट येट डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ. दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट वी विल नॉट पास एनी एंट्री. नो, दैट इज इनकरेक्ट. अगेन द अकाउंटेंट शुड इंश्योर दैट जो भी चेक्स इन हैंड है उसकी चेक्स इन हैंड बोल के आप एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट को क्रेडिट मत करो बिकॉज वो हुआ नहीं है. चेक्स इन हैंड बोल के एंट्री पास करो, बट दैट शुड बी स्टेटेड इन द बैलेंस शीट कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर चेक्स इन हैंड इतने अमाउंट का है. तो अगेन द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये 2 क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि कहीं और नहीं पूछे गए, इस MTP में नए थे, तो मैंने डिस्कस कर दिए. इसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें मोर और लेस ऑल द क्वेश्चंस आर कॉमन. कहीं ना कहीं आपने ज़रूर ये क्वेश्चंस देखे होंगे. जो नए क्वेश्चंस है उसको मैं बताती हूँ आपको. अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट D. ऑल्दो ये भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं एक बार इसको रेफर कर देती हूँ. द वर्किंग पेपर्स ऑफ द ब्रांच ऑडिटर are also the property of the principal auditor and the management of the company, so they have right to access them. State the relevant essay and comment. So essay का नाम है essay 230, audit documentation, which says that audit working papers are the property of the auditor and auditor may at his discretion provide the working papers to the client or any other person, ठीक है, keeping in mind the confidentiality clause. बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल ऑडिटर का भी वो वर्किंग पेपर्स प्रॉपर्टी हो गया. ब्रांच ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर अलग है. ऑल्दो प्रिंसिपल ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ द ब्रांच ऑडिटर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वर्किंग पेपर्स आर देयर प्रॉपर्टी. सो द स्टेटमेंट इज हियर इज इनकरेक्ट. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस वी हैव मोस्टली सीन समवेयर और द अदर. यू सी वन थिंग दैट आई वांट टू शो इज क्वेश्चन 6 पार्ट A,
With respect to audit in an automated environment, explain the following. Any four. क्या क्या पूछा? डेटा प्रोसेसिंग बताओ, ईआरपी, जनरल आईटी कंट्रोल, ऑटोमेटेड क्या होता है ये बताओ, डायरेक्ट डेटा चेंज क्या होता है ये बताओ. तो इफ यू रेफर टू योर ICAI स्टडी मटेरियल, ये क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर कहीं इंक्लूडेड नहीं है इस टाइप के डेफिनेशंस, बट एट द एंड यू विल फाइंड अ ग्लॉसरी, यू विल फाइंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. वहां पर इन सब टर्म्स का डेफिनेशन इंक्लूडेड है. और मैं हमेशा, इनफैक्ट हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ, रिवीजन क्लासेस में, रैपिड रिवीजन में, मैंने सब में ये मेंशन किया है कि डेफिनेशंस फ्रॉम द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर आर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड गो थ्रू देम. एंड इनफैक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम में जब हमने इसका क्विज लिया था, आई गेव मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द डेफिनेशंस एंड यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चंस गलत हुए बिकॉज आपने डेफिनेशंस को पढ़ा ही नहीं. सो इस क्वेश्चन से हमें सबक मिल रहा है क्या? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी. यू सी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रॉम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर. ठीक. इसके बाद में और क्वेश्चंस अगर हम देखें, यहाँ पर GSR एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ टैगोर स्कूल, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एंगेजमेंट टीम वांट्स टू वेरीफाई फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन डिटेल. एडवाइज द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड. तो देखो यहाँ पे सिर्फ फीस के बारे में पूछा. रेवेन्यू इनकम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की और भी कई होती है, बट फीस फ्रॉम स्टूडेंट पूछा. अगर आप लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड किया, मेरी रिवीजन क्लासेस अगर देखी है, मैंने स्पेसिफिकली बोला है गाइज अब 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो एक एलिमेंट के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं इसकी ऑडिट कैसे करो. यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी व्हेन आई सेड दैट जो एडिशंस हुआ है उससे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है. तो ऑडिट ऑफ बैंक्स में इसका एडिशन इंस्टीट्यूट ने किया था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स उन्होंने ऐड किए थे. हमने भी लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज में उसको कवर किया है. इनफैक्ट रेगुलर क्लास में हमने इसको पहले भी कवर किया था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स प्रिवेलिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ सच बैंक्स. तो जो भी कमर्शियल बैंक्स है, पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक्स है, RRBs है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, सबके डेफिनेशन मतलब मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करना है एंड एग्जाम्पल देना है. सो फॉर दिस यू कैन रेफर आर लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज. इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मोर और लेस सिंपल थे. इनफैक्ट आपने कहीं ना कहीं उसको रेफर किया ही होगा, कोई ना कोई ICAI पब्लिकेशन में या आपके स्टडी मटेरियल में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द RTP ऑफ ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, MTP ऑफ ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस फॉर द March 21. दैट इज द फर्स्ट सीरीज फॉर May 21 अटेम्प्ट. इसका जो सेकेंड सीरीज आएगा कब आएगा पता नहीं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो. अगर कुछ नए क्वेश्चंस हुए तो, नए क्वेश्चंस अगर नहीं होंगे तो आई डोंट वांट टू प्लेस बर्डन ऑन यू अननेसेसरीली. जो नए क्वेश्चंस है सिर्फ हम वही कवर करेंगे. इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का भी MTP मैंने देखा, बट वहां पर मुझे एज सच कोई नए क्वेश्चंस मिले नहीं, इसीलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ. ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. And you can also let me know if you want videos on any specific topic with respect to your CA Inter audit syllabus. I'll be glad to provide. Thank you so much everyone. God bless you all. All the best.